केसी वेणुगोपाल मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सुनिएगा उन्हें। मैं पीसीसी के अभिनंदन देना चाहता हूँ। आई थिंक राजस्थान विल प्ले a big role in this rally. You people know that what is happening in the parliament. This vote chore issue is not Congress party issue alone. This is a national issue. Attack on basic principle of democratic values. Vote for a common man is not a mercy from the government. Targeted deletion, targeted addition, इसी तरफ कैसे चले गए? So we are starting a big movement all over India. Yesterday, Rahul Gandhi ji challenged Amit Shah ji. He has done 3 press conferences. All the 3 press conferences, Rahul ji raised a very, very important issue, citing examples. Yesterday, Amit Shah is telling Rahul ji is telling lies. That point of time, Rahul ji challenged Amit Shah. I am ready to have a debate on this issue on my press conference. Are you ready? बहुत तैयार नहीं है. I think entire nation is now worried about this issue. Congress party and India Alliance is going to take up this issue in a bigger level. That's why the 14th rally is only a beginning. It will continue. बहुत लंबा लड़ाई है. We will fight it out. आपको लगता है सर इससे कुछ असर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे या मोदी अमित शाह पे कुछ? Certainly, it will become a movement. असर हो गया. We are going to have a big movement in India. All over India, we will demonstrate the people. Now people are also realizing that something is happening in these elections. Everybody know that. Because simple question. Machine readable voter list. We are asking for machine readable voter list. What is the problem for giving machine readable voter list? Digital India है India में. They are telling digital India है. Why they are denying this machine readable electoral list? Why they are not reinstating CCTV footage? These are the important questions. There is no answer. The entire opposition party is having a mistrust with the Election Commission of India. At least they should come and explain us. They should come and give an answer to us. No answer is giving. It's clearly our democracy is in danger. It is our duty. We think that it is our duty to fight it out and bring back the democracy in India. Actually, that is the real fight is going to be happen. We will not let down this agitation. We will go ahead. Makan ji, आपने बोल दिया सब बोल दिया अच्छे से. सर सवाल ये है कि प्लान क्या है? डेमोक्रेटिक इशू आप बता रहे हैं, तो ये इसमें जन आंदोलन जैसा होना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए. क्या कांग्रेस उसी तरीके से हम last 2 months we are doing a signature campaign all over India demanding these 5 issues. These 5 issues including electronic readable voter list also, machinized readable voter list. These 5 issues we are citing this 5 issue and we are started a signature campaign. So far 5 crore signature had been got. We are going to present this 5 crore signature to the President of India. This is only a beginning. Now we will go to district, block, booth level. We will try to educate the people of India. Certainly, there will be a program. आप तो राजस्थान की नब्ज जानते हैं अच्छे से, आप यहाँ रहे हैं, नब्ज जानते हैं. इस रैली की सफलता में राजस्थान का कितना योगदान रहेगा? देखिए, राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि पंजाब में उसी दिन चुनाव है.
तो राजस्थान में हम स्पेशली आए हैं क्योंकि हमें राजस्थान से बहुत उम्मीद है और हमको लगता है कि राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे और हमें खुशी है कि पूरी तैयारी है। वेणुगोपाल जी ने जैसे बताया, जो महत्वपूर्ण सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कोई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट देने में उनको क्या हर्जा है।